right? So now this is the last problem. Okay, so chalo, let's read this. What does this say? क्या बोलता है problem? देखते हैं. A chemical company gives you the following standard and actual data of a particular product. ठीक है? Or calculate variances of material. So what has been asked is material variances. Okay, so we'll go ahead as per the problem and solve it. Okay, now see, standard data is 450 kg of material A. Okay, standard price is 20 per kg. Okay, so multiply 450 by 20, you'll get 9,000. Okay, and then next is 360 kg of material B. At 10 multiply, you'll get 3600. The total is 810, and total price is cost is 12,600. Okay, next part is labor, but we have not been asked labor variances in this problem. Okay, इस problem में पूछा नहीं गया हमको. So is data ka as such in this problem we don't have a direct use. Okay, so here so basically what this means is the red block, the labor have worked on this material of 12,600 quantity value. 810 kg is the quantity. ठीक है, 810 kg इसका क्वांटिटी है, 12,600 कॉस्ट है. ये जो लेबर है स्किल्ड और अनस्किल्ड, इन्होंने इस मटेरियल के ऊपर काम किया है. ठीक है, सो बस ये मतलब है उसका. लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखिए आपको सिर्फ मटेरियल वेरिएंस पूछा है. ओके, सो नाउ देयर इज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 90 ड्यूरिंग प्रोडक्शन and 810 minus 90 gives you 720. Okay, normal loss always applies to the material, right? और ये है 12,600 और ये है आपका लेबर का कॉस्ट. ओके, this is your labor cost, add the two, you will get total cost of this. Okay, so what we have to find here is, okay, variances for this part. ठीक है, now same, now actuals data for this. This is your actuals data. ठीक है, let me just go through once. यहाँ पे हम देखते हैं तो we'll just quickly we can find out there's a difference between these two prices. Okay, and there's a difference in labor prices also. So immediately we are not going to labor variances. Okay, so हमारा main यहाँ से मतलब है. Okay, and this is 810 here, and here also it is 810. Okay, but मैंने क्या बोला था कि आप वेरिएंस एनालिसिस करने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप. ठीक है, ऑलवेज योर फर्स्ट स्टेप विल बी मैच द आउटपुट. ठीक है, तो कभी भी आपको ये करना है, फर्स्ट स्टेप विल बी मैच द आउटपुट. ओके, you will, if your output, actual output is not the same as standard, then find a standard which matches the actual output. ठीक है, so now see the output here is 720 and in actual output is 760. What you have to do, the actual output is 760, to match this up, match your standard with the actuals. ठीक है, कभी भी आपका स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड विल ऑलवेज बी अ गाइडलाइन. यू विल हैव अ स्टैंडर्ड, से हम बोल रहा हूँ कि 50 यूनिट्स का ये स्टैंडर्ड है. ओके, बट इन एक्चुअल यू कैन एंड अप producing 90 units sometimes you will produce 180 units, sometimes you will produce 250 units. Okay, sometimes 500 units, है ना, ये तो चेंज होता रहेगा. तो आपका जो स्टैंडर्ड का वन गाइडलाइन विल बी देयर, इसका बस प्रोपोर्शन चेंज करके यू विल हैव टू मैच इट विद द एक्चुअल्स इन ईच ऑफ द केसेस. ठीक है, समझ में आया ना. so, इसीलिए अभी हम इसको भी ऐसे करेंगे. सो लेट अस सी, सबसे पहले हम अपने टेबल्स बनाते हैं. ओके, विल मेक आवर टेबल्स.
सो फर्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड, जैसा का वैसा डेटा डालना है, नथिंग यू हैव टू डू, whatever is given in the problem I'm putting as it is. Okay, these all have been put as it is. ठीक है, 720 and 18600. Okay, this is one. Actual output is 760. Okay, and in okay, so here second table हमने डाला है यहाँ पे क्या, actual डाला. Okay, they put second table of actual. So here हमने जैसा डेटा वैसे डाल दिया, हमें कोई there is no change. Okay, जैसे प्रॉब्लम में से निकाला हमने और हमने इसको डाल दिया सीधा वैसे, no problem. Okay, right, so till here I have not done anything. Okay, now third thing what we will do is, ये जो एक्चुअल है इसी को विल फाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट. बस ये रेट चेंज कर देंगे एक्चुअल में, विल पुट द स्टैंडर्ड रेट्स. ठीक है, एंड विल फाइंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट. ठीक है, और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी. ठीक है, सो बस यहाँ पे 450 वही ले लिया, बस स्टैंडर्ड कॉस्ट डाल दिया, दैट्स ऑल. ओके, ये हमारा होता था थर्ड टेबल, जो मैंने आपको बोला था कि इसको हम लोग 2 बोलते हैं. दिस इज आवर टेबल 2 एक्चुअली. ठीक है, और दिस इज टेबल 2. क्या ये 1 है? नहीं, क्योंकि ये दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वी वांट. ठीक है, तो हमको चाहिए स्टैंडर्ड जो है, जो इसके लिए अपन मैचअप करें आउटपुट के लिए. ठीक है, हम यहाँ पे ये बोलेंगे बेसिकली, नाउ वी विल से कि 760 चाहिए हमको, राइट. 720 के लिए ठीक है, 720 नहीं, सबसे पहले एक काम करते हैं. ओके, सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम वेरिएंसेस कहाँ से निकालने वाले हैं, हम इस पार्ट का निकालने वाले हैं. करेक्ट, यहाँ से निकालने वाले. ओके, लेट्स डू वन थिंग. इसका जो है आपका 810 जो है ना, इसको हम पहले इसका रिवाइज फिगर निकाल देते हैं, तो हमारा जो ऊपर का स्टैंडर्ड टेबल है ये रिवाइज हो जाएगा. ओके, तो ऐसा करेंगे इसको कि ऑल प्रोपोर्शंस आर गोइंग टू बी द सेम. करेक्ट, सो हम बोलेंगे, so if 720 के जगह यहाँ 760 होना चाहिए. ओके, 720 के जगह क्या होना चाहिए, 760 होना चाहिए. तो अगर 810 इनपुट होता तो उसके जगह क्या होना चाहिए. ओके, इस तरह से हम प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं. ओके, 720, इफ 720 इज द आउटपुट अभी का, बट फॉर माय स्टैंडर्ड आई नीड 760. so अगर इनपुट, दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट. ठीक है, अगर 810 होता तो ये कितना आएगा. ठीक है, आई एम फाइंडिंग जो 720 के लिए जो 760 है, वैसे 810 के लिए क्या है वो निकाल रहे हैं. ओके, राइट. from an input point of view, this will be what, 810 into 760 upon 720. ठीक है, equals to 810 into 760 upon 720. This becomes 855. ठीक है, सो यानी मैं अगर, इसका मीनिंग ये है कि if I put 855 here, okay, then I will get an output of 720. so हम इसको, इसी चीज को हम यहाँ टेस्ट करके देखते हैं. सेम नाउ इसको मैंने फोर्थ टेबल में डाला है. ओके, दिस सेम टेबल इज आवर अपडेटेड स्टैंडर्ड. ओके, राइट. फिर हम इसको हम हटा देंगे, फिर दिस इज नो मोर आवर स्टैंडर्ड. ये फोर्थ टेबल को जैसे हमने किए थे और एक प्रॉब्लम में, इफ यू रिमेंबर, वी हैड क्रिएटेड एन अपडेटेड स्टैंडर्ड एंड दिस स्टैंडर्ड बिकेम द फर्स्ट टेबल. ये टेबल बाहर हो गया था. ओके, सेम थिंग विल हैपन नाउ. तो चलिए, बस इसमें कुछ भी नहीं, सब सेम रहेगा. ओनली थिंग इज विल टेक द न्यू फिगर्स. ओके, नाउ ये 4, यहाँ पे व्हाट वी डिड,
इंटू, ठीक है, 810 इंटू 760 अपॉन 720 है ना, यानी 76 अपॉन 72। तो ये सबको भी जो है हम ना मल्टीप्लाई 450 बाय 76 अपॉन 72, यू विल गेट 475। ठीक है, ठीक है, 450 इंटू 760 अपॉन 720, individually all these things into 760 upon 720. Okay, and here we get 855, और चलिए लेबर को छोड़िए वैसे का वैसे। ओके, एंड नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस विल बी 95 हियर। ठीक है, ये आपका मटेरियल बढ़ गया है ना, नॉर्मल लॉस विल इंक्रीज, ये कितना परसेंटेज वाइज इवन योर नॉर्मल लॉस को, ठीक है, your normal loss will also increase by the same proportion. Okay, everything what you are increasing, जब आपका proportion will increase, new material will increase, your normal loss also will increase by the same proportion. Okay, जैसे for example मैं ये बोल रहा हूँ कि if your say material A, material B, ठीक है, A is 50, B is 100, okay, and this is normal loss, ठीक है, and this is 10, ठीक है। अगर मैं इफ आई एम डबलिंग अप दिस मटेरियल, ठीक है, पूरा मटेरियल का डबल कर रहा हूँ, ओके, दैट मीन्स अगर मैं ये पूरा चीज अगर मैं फिर से डालूंगा, देन सेकेंड पार्ट जो है, ओके, सो दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट, लेटर से सेकेंड पार्ट में अगेन आई विल हैव द सेम नॉर्मल लॉस। ठीक है, so, इसका मतलब ये है कि ये जिस प्रोपोर्शन में मटेरियल बढ़ता है उसी प्रोपोर्शन में नॉर्मल लॉस भी बढ़ेगा। ओके, राइट, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरह से, right, so your normal loss will increase in the same proportion as your material. So material has increased it in the proportion of 76 upon 72. Okay, then your normal loss will also increase in the same proportion. And now if you deduct your normal loss, you get your 760 here exactly. Okay, you get 760 exactly, which is the output we needed. Okay, so now we have got this standard. Okay, we have got the updated standard. अब हम क्या करेंगे, this updated standard, okay, this we will put in place of our original standard. Okay, okay, so this updated standard what we have got here, okay, this we will put in its place, this place. Okay, and what will happen to this standard, we don't need this will get cancelled out. Okay, इसकी अब हमको जरूरत नहीं, this is not our standard anymore. ठीक है, ये कट जाएगा, and then we will end up having our 3 tables. ठीक है, so now again another thing is, for all our variances, for material variances, we need only this part. Correct, we only need this part now. ठीक है, पहला वाला तो we won't need, right? So basically this part of all 3. ठीक है, so I'll move these 3 parts separately, so it will be easier for us to compute. Okay, बस ये 3 टुकड़े मैं अलग कर रहा हूँ यहाँ पे. Okay, right, so now first table will become what, this table. Okay, this table is your first table now. Okay, going forward, so chalo, I will move here this side. Okay, so now this is your first table. ठीक है, so now you can see this is 855. ठीक है, तो हमारा फोर्थ टेबल था वहां पे, that has become our first table. आपको फिर से एक बार, if you want to be sure, मैं I'll tell you, this is your fourth table, 475, 380, 855. Okay, see 475, 380, 855, total is 33,300. Okay, fine. तो अब ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड, updated standard is nothing but our standard. Okay, understood. ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं. So that's also हम पहुंच गए अभी where
we need to reach to calculate our variances, we have our tables. Okay, so this is the standard now. So updated standard is nothing but our standard. Below is your actual, and here is your standard cost of actual quantity. Okay, basically I've just picked up the standard, this actual, put it here, and I've just changed the rates to standard rates. That's all. ठीक है, ये 3 बन गया हमारा. अब चलिए RSQ भी निकाल लेते हैं, लगे हाथ में. ओके, in RSQ what we do is we always match this with the actual quantity, right? ठीक है, actual quantity के साथ हम match up करते हैं. तो if this is 810, तो ये क्या होता था, 810 into 33,300 upon 855, correct? Into this upon 855. Okay, आपको पूरा टेबल का बनाना है, मैं हमेशा बोलता हूँ. ओके, so just multiply by 810 upon 855. किस किस को multiply this also and this also. Okay, so you'll get a revised standard quantity table. Okay, it will have material A, material B, and the total of it will be 810. Okay, ठीक है, इसका टोटल इज 855, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी विल बी 810. सो इन ऑल टोटल में क्या होगा, 810 into 33,300 अपॉन 855, दैट गिव्स यू ये. ठीक है, हमको ये मिल गया हमारा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी. चलिए, देन एवरीथिंग वी हैव नाउ टू कैलकुलेट, यू नो ऑल द थिंग्स ऑलरेडी. ठीक है, दिस इज एक्चुअल, दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी. ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? ओके, व्हाट इज, बताइए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. स्टैंडर्ड कॉस्ट जो कि पहला है माइनस एक्चुअल कॉस्ट. ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, दिस इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. तो आप भी इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो, जस्ट पॉज इट. ठीक है, आप भी अपना आंसर निकाल लीजिए, टेक आउट योर आंसर एंड देन मैच इट विथ व्हाट आई एम शोइंग इट. ठीक है, सो देन दिस इज ये. प्राइस वेरिएंस क्या होगा? प्राइस वेरिएंस का ऑलवेज बी मैच this standard cost of actual quantity minus actual cost. ठीक है, ओके, एक मिनट, कॉस्ट वेरिएंस, एक मिनट सॉरी, इसमें जो है कॉस्ट वेरिएंस, ये दिस इज एक्चुअली रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, जो नीचे लिखा है. सो दिस इज एक्चुअली 13,300 हमको लेना है. ओके, करेक्ट. स्टैंडर्ड टेबल इज अबव वन, लेकिन नीचे तो RSQ लिखा है मैंने. ओके, सो पहला वाला विल बी 13,300, which will be standard cost minus actual cost is this. So it is going to be 790. Okay, so 790 means it will be favorable variance. Okay, okay, and this is 90 again, favorable variance. Then usage variance is how much? Usage variance is this standard minus second standard, this one. Okay, so this gives me usage variance. All three are favorable. Okay, all three are favorable. ओके, तो अब आ गए हम मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस पे. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज द यील्ड वेरिएंस हियर. डिफरेंस बिटवीन दीस टू विल गिव मी यील्ड वेरिएंस. ठीक है, ये माइनस ये. ठीक है, एंड सी हियर अगेन, इफ यू सी, always go by the, if you go by the formula, it is always standard minus revised standard quantity. So you automatically get a positive figure, which means it is favorable. Okay, nahi to bhi, if you just go by logic, you will know that standard says that 855 material should be needed, but in actual less than that was needed. So it's a favorable variance. You have used less material than needed. Okay, ठीक है ना. इस तरह से ये दूसरे लॉजिक से भी आप देखोगे तो ये होगा. नाउ सेकंड थिंग इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस में वो क्या करते हैं हम, वी जस्ट यूज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ओके, माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, बिकॉज बोथ आर सेम, इट्स एविडेंट दैट इट इज 0. ओके, सो बिकॉज देयर इज नो मिक्स वेरिएंस, ओके, व्हिच इज व्हाई आपको which is why your usage variance
becomes your yield variance also. Okay, because usage variance is equals to mix plus yield, है ना? And again check material cost variance is equal to price plus usage. That's also correct. Okay, इस तरह से this is the solution to this problem. So more than this, from the scanner and all, we'll come back to it. Okay, we'll do it little later along with revision. Okay, let us just go ahead with the course right now and try to complete it little early, right? फिर हम आराम से बैठ के फिर वही काम रहेगा आखिरी में. We'll just go to various chapters and solve some additional problems from scanners and all. Okay, so here at this point of time, from your study material, your labor is complete. Your labor variances are also complete. So for your standard costing completed. Okay, for whom? For paper 8 cost accounting. Okay, for paper 10. Okay, paper 10 CMAFM. Okay, we will continue doing other variances. Okay, we'll have fixed overhead variances, variable overhead variances, profit variance, sales variance. All those things we'll do for CMAFM. Okay.